Hello guys, we are live now. So today's class uh, is for the chapter Gravitation, class 9th. I'm your educator Ravikant taking this class. So kindly join this free live session for class 9th Gravitation. I'm sending you the link. So hurry up and join. So we are going to start this session for 35 minutes and, uh, and then it's 8:56. Okay, so you guys are waiting for me. So क्लास 9 बजे से स्टार्ट होगी, सभी लोग ज्वाइन कर लो। अभी 8:56 है, अपन सेटअप जोड़ के बैठ गए। वेयर इज द ग्रुप? ओके, हियर इज द लिंक। सो गाइज जल्दी जल्दी आ जाइए एंड देन वी विल स्टार्ट ग्रेविटेशन। Okay, so we are going to start this session for chapter gravitation. uh, so how many of you are live? Okay, Ayush, Sheng, Saksham. ओके, क्लास 10th की आज नहीं हो पाएगी। क्लास 10th की हम लोग कल करेंगे लाइव सेशन एंड हेलो, एम आई ऑडिबल? चलिए जी, शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन। हाय 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 शशिकांत, 4 of you are watching. आयुष सिंह, हाय एवरीवन। सो आज के चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, कुछ फिनोमेना जो बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो देखेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे एंड देन वी विल जंप टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और वी कैन से द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड फिर उसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ पर किया किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बारे में देखेंगे। सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लाइव सेशन। होप यू गाइज विल इंजॉय। अभी स्टार्ट करते हैं, सारे कम से कम बच्चे एटलीस्ट 15 आ जाए। या इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो आई विल स्टार्ट fresh. Okay, Ayush, I will start it fresh because some of them are not present in the class. Okay, so and then what are the units of universal law of gravitational constant की क्या unit है,
who gave the value of gravitational constant and what is the unit? Hi, minister. Hi, minister. Okay, and then we will solve some problems related to the formula given by the Newton, that is F is equal to G m1 m2 by r square. So we will discuss that thing. Hi, minister. Please subscribe my channel. Raghav Ram. Hi, sir. Hi, everyone. Hi, hi, Raghav Ram. So we will continue. Please subscribe my channel, and this channel is for physics wala. Okay. Hi. People are making a duplicate करके उसको. Hi, everyone. Who is this Raghav Ram? Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन लेक्चर 1. So 7 people are watching this. So let me start. Okay. Let's start. Okay. So सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, ठीक है. So I'm making the notes for you guys. So you just uh, I don't know where the other guys are. Okay. So हम लोग बिल्कुल प्रॉपरली नोट मेकिंग भी कर. एक्चुअली दिस इज आई एम राइटिंग ऑन द गुड नोट, सो you don't need to make the notes. You just need to understand the things, and if you have any kind of doubt or some sort of questions, तो उनको पूछ सकते हो, ठीक है, in this live chat. बट समझते जाओ, मैं यहाँ पे आपके लिए ही नोट मेकिंग कर रहा हूँ. नो, इट्स लाइक अ नोट मेकिंग एंड kind of a study session, interacting session. Okay. So the very first uh, so introduction. So in this chapter, gravitation. Hi, Pratyanshu. Killer smile. Okay, hi. So in this chapter, in the previous chapter, motions and laws of motion में हमने देखा था कि what is motion and uniform motion, non-uniform motion, accelerated motion equation हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है. फिर हमने laws of motion and force पढ़ा था, ठीक है. rate of change of momentum क्या होता है, ठीक है, and conservation of momentum, impulse and all these things हम पढ़ के आए हैं, ठीक है. अब उसके बाद जब फोर्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो नाउ वी आर जंपिंग टू द सेक्शन विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. सो यू हैव सीन दैट कि जब भी आप किसी चीज को, सपोज करो ये आप हो या मैं हो, जो भी है कोई, आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो. So, जब कभी ड्रॉप करते हो वो नीचे जाता है, ठीक है. लेट्स से दिस इज ग्राउंड, तो वो नीचे की तरफ ड्रॉप होता है. सो व्हाई इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स? Because earth is attracting. Let's say this is earth, so earth is attracting that body. Let's say this is the body which is attracted by the earth, okay. That's why it is going downwards in the downward direction, okay. So this motion of this, the motion of this body is because of some sort of force which is applied by the earth, okay. And that's why I'm good killer, I'm good. So okay, now, so if we drop anything, so it is going downward. This my pen tablet जो पेन है वो ऐसे जा रहा है, नीचे नीचे जा रहा है ना, देखो जैसे मैं छोड़ रहा हूँ नीचे जा रहा है. Why it is going downward? Because the earth is applying a force on it, ठीक है. There is a force which is applied by the earth. Now another, this is the introduction part, so let me plot a whole uh, you know पूरा एक तरीके से बता देते हैं कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना. अच्छा, all the planets are, yeah, killer. Hello, quiz master. Hello, hi everyone. Please subscribe my channel. Okay, so if suppose that this is our sun. ये आदत होती है ना सब लोगों की, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा ठीक है. ये बचपन से हम लोग बनाते आए हैं ना, एक छोटा एक बड़ा. हमारे यहाँ पे जब आर्ट्स का टीचर आता था तो बताता था कि सन ऐसे बना लो बच्चों, ठीक है. सो देयर इज, इट इज सन, ठीक है. लेट, माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड, सो लेट्स सी. तो दिस इज सन एंड द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है ना. एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है. सो दिस इज, लेट्स से अर्थ. This is earth, and we have a another
revolution of moon. This is moon, and the moon is revolving around the earth. So why they are doing so? क्वेश्चन है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? सो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई आंसर देगा मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई आंसर देगा मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, या वी विल डू एवरीथिंग, प्रॉब्लम फ्री फॉल तक आएंगे हम लोग, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी देयर इज अ फोर्स। देखो, अभी हो क्या रहा है कि दिस प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो एवरी टाइम इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना? यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इज चेंजिंग। सो वी कैन से दैट इफ द डायरेक्शन इज चेंजिंग, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। आ रही बात समझ में? अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो there is a unbalanced force which is exerted by the sun on the earth। क्लियर हुआ ये? तो अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है, सर्कुलर मोशन है, and if it is a accelerated motion, then there must be a force which is exerted by the sun on the earth, and that unbalanced force is what we call here is called gravitational force। तो अर्थ को सन खींच रहा है अपनी तरफ बिकॉज ऑफ a force which is called gravitational force। हिया पटेल, centripetal force। Yeah, good, that is a kind of centripetal force, ठीक है? Now, or in the same way, the moon is revolving around the earth. Why it is revolving around the earth? Because every time the moon, the velocity is changing and the moon is in the accelerated motion. So that's why there must be an unbalanced force which is acted, which is applied by the earth on the moon। ठीक है? इतना समझ में आया आपको? Now, so this all phenomenon कि ये जो फोर्स लग रहा है, मोशन ऑफ द प्लैनेट्स है, दिस वाज ग्रास्प्ड बाय द न्यूटन। ठीक है? तो न्यूटन ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, इसके बारे में सोचा। ठीक है? सो न्यूटन ग्रास्प्ड द नेचर ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन दीस काइंड ऑफ मोशंस, मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। एंड जब भी कोई चीज हमने ड्रॉप की है वो भी अर्थ की तरफ जा रही है, तो इस चीज को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? न्यूटन ने। ठीक है सर, तुसी ग्रेट हो। थैंक यू वेरी मच। एंड चलिए जी, तो अब इस चैप्टर में आते हैं, शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशन की। ठीक है ना? व्हाट इज ग्रेविटेशन? सो इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखता हूं अभी मैं आपको, है एक लिख के देता हूं। सो ग्रेविटेशन क्या है? सो इट इज डिफाइंड एज द phenomenon of attraction between any two bodies in the universe। ठीक है? तो फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, physical phenomena। So this is a kind of phenomena in which two bodies in this universe attract each other, and this phenomenon is called gravitation। Understood? समझ में आ गया आपको ग्रेविटेशन की डेफिनेशन? आगे बढ़ते हैं। सो ये ग्रेविटेशन के बारे में बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि न्यूटन एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा, देन ही ऑब्जर्व्ड एंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि ये कैसे नीचे आया होगा, है ना? सो कि अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया है। सो अर्थ हैज exerted a force on the apple, and similarly when we throw any body up in the air, so it goes to a certain height where its velocity becomes zero, and after that it returns back to the ground। What is your watch time? I don't know, I will tell you later। Okay, so when we throw any object
अप इन द एयर, तो ये ऊपर जाता है, जाते 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 एक एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, एंड दिस ऑब्जेक्ट कैन नॉट गो फर्दर अपवर्ड, अब ऊपर नहीं जा सकता, एंड देन इट रिटर्न बैक टू द सेम लेवल जिस जहां पर आप हो, ग्राउंड पे, ठीक है। सो व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग दैट बॉडी। ओके, नेक्स्ट, इन द सेम वे व्हेन वी रिवॉल्व, ओके, सो हमने एक रस्सी में, सपोज दैट हमारे पास एक रस्सी है और उस रस्सी में एक मास हमने इस तरीके से बांध रखा है, एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड, ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं हम लोग, ठीक है, मस्त, आपने घुमाया होगा, है ना। तो क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से रहेगी, एवरी टाइम द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी इज चेंजिंग, यू सी, ठीक है, व्हिच मींस दैट इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर कहीं ये रस्सी टूट जाए, सपोज टूट गई, तो ये पत्थर जो भी, या पत्थर था या स्टोन या फिर कुछ भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने बांध रखा था, इट विल गो टेंजेंशियली, कैसे जाएगा, टेंजेंशियली, टेंजेंशियली, समझ में आई आपको, इट विल गो अलोंग द टेंजेंट, क्लियर हुआ ये, और सीधा जाएगा ये। तो ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर मोशन में क्यों हो रहा था, क्यों ये ऐसे सर्कुलेट कर रहा था, बिकॉज देर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन इट विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, देर इज अ फोर्स विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स विच मींस सेंटर सीकिंग फोर्स, it is acting to acts towards the center, acts towards the center, समझ में आई, acts towards the center of the circular path, center of the circular path, ठीक है, ऐसा फोर्स, ठीक है, समझ में आई। नाउ okay, yes, it is acting towards the center and it is perpendicular to the tangent, good Pratyanshu, good, बढ़िया था, गुड, ओके, चलिए नेक्स्ट, इन द सेम वे, ये समझ में आया, तो प्लैनेट्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लैनेट्स भी ऐसे सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन एवरी प्लैनेट टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंटर क्या हो गया हमारा, सन, ठीक है। सो फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, सो वी कैन से दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सन, ओके ओके, आई विल ट्राई, सबके लिए होगी बुक्स, चलिए अभी फोकस करते हैं लेक्चर पे, ठीक है। Now, from these observations, the Newton concluded that not only the Earth is attracted towards the Sun, other planets are also attracted towards the Sun. Also, the Moon is also attracted towards the Earth. मून भी तो अर्थ की तरफ चक्कर लगा, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो मून भी चक्कर लगा रहा है इसके लिए। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, ठीक है। नाउ अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, नोट दैट this force of attraction, this gravitational force, the gravitational force acts between, is acts sorry between terrestrial or terrestrial or celestial bodies, celestial bodies,
द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन द टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल बॉडीज। किसी कहीं पर भी ये यूज हो रहा होता है, ठीक है ना, कहीं पर भी लगेगा। अब क्या कैसे, जैसे सपोज करो आप अर्थ पे हो, दिस इज अर्थ, तो अर्थ पर इफ देयर आर टू बॉडीज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज विल एक्ट। यहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सेलेस्टियल बॉडीज मींस सपोज दैट दिस इज सन, दिस इज अर्थ एंड हेयर वी हैव मून, तो मून और अर्थ के बीच में भी लग रहा है, दीज आर द सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। एंड दिस कैन एक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स विच आर एट द ग्राउंड, इन पे भी लग रहा है, जो ऊपर स्पेस में है उनके बीच में लग रहा है। दूसरी चीज है वैक्यूम होगा, अगर कोई मीडियम नहीं है वैक्यूम में भी लग रहा है, इफ देयर इज अ मीडियम तब भी लग रहा होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? प्रत्यांशु वेरी गुड। इन वैक्यूम इट इज ऑल्सो एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज। एंड इफ लेट्स से मीडियम भी है, पानी के अंदर अगर दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं या पानी के अंदर आप स्टोन डालोगे ऐसे, तो वो भी नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो मीडियम है, वाटर इज द मीडियम, तब भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। एक्ट्स बिटवीन द टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल बॉडी एंड this force this force may be this force acts between the bodies of any shape and size, shape and size, कोई भी शेप एंड साइज हो, ठीक है ना। अगर क्यूब टाइप का है पत्थर तो भी वही लगेगा, सर्कुलर है तो भी लगेगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये? तो भी लगेगा। समझ में आ गई बात ये? तो किसी भी शेप एंड साइज का हो तब भी लगेगा। एंड वट एवर इज द डिस्टेंस बिटवीन दोज, एंड what may be the distance apart the medium and whatever the medium is between them those bodies, so agar and this force, एक और चीज है, this force may act at any distance, acts at any distance between at okay this may force this force this force may act between the bodies between the bodies at any distance apart, कितने भी दूर हो, with any medium between them और वैक्यूम, और वैक्यूम, ठीक है। मीडियम हो या ना हो, वैक्यूम होगा तो भी ये लगेगा, किसी भी डिस्टेंस पे होंगे तब भी लगेगा। क्लियर हुआ ये? नाउ another characteristic is this force of gravitation, this force of gravitation is attractive in nature, attractive in nature, this is attractive in nature, ठीक है। it it is it is never repulsive, it is never repulsive, remember this thing, it is not repelling, हमेशा कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये सबको? प्रत्यांशु कहाँ गए सारे लोग? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। नेक्स्ट, नाउ हियर इज द टॉपिक विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ, पहला टॉपिक, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल, क्लियर है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो न्यूटन ने क्या इसका जवाब दिया था, क्या क्या कितना फोर्स लगता है? क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड क्विज मास्टर, ओके। सो ही स्टेटेड that every object in the universe, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, in the universe
attracts every other object with a force which is number one sorry number one directly proportional to directly ओके बिल्कुल बिल्कुल नोट्स तो आपको भेज दूंगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेरी गुड आपको अगर आप पता है तो आप लिखिए ओके यू कैन कमेंट ऑन इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses the mass product of their directly proportional to the product of their masses थोड़ा सा directly proportional to the product of their masses and number two inversely proportional to the square of the distance between their centers okay उन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस ओके एंड यहां पर एक चीज नोट करने वाली क्या है दैट व्हाट इज द नोट पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ this attractive force is along the line joining very good line joining the centers of the two objects क्लियर हुआ एंड टूवर्ड्स ईच अदर ठीक है ना टूवर्ड्स ईच अदर क्लियर हुआ यहां तक वेरी गुड सूर्यांश पाल वेरी गुड सो सपोज दैट वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स देखो मैं यहां ड्रॉ करता हूं सपोज दैट वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ये नहीं लेंगे दूसरा लेंगे लेट्स से ये लेते हैं वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स लेट्स से दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स okay these are the two objects and this is the center of these two objects ठीक है ना और इनके बीच का जो डिस्टेंस है this distance I am representing here by distance let's say r this is represented by r ठीक है और इन दोनों बॉडीज का जो मास है लेट्स से इट इज गिवन बाय m1 एंड m2 इट इज गिवन बाय m1 एंड m2 सो फर्स्ट बॉडी मास m1 है एंड सेकंड बॉडी मास m2 है क्लियर हुआ ये नेक्स्ट अभी क्या बताना है पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस व्हिच मींस दैट कि जो भी इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ठीक है हाँ यू कैन यूज डी और आर एनीथिंग ठीक है डी डिस्टेंस आर डिस्टेंस ओके सो एज पर योर चॉइस लेट्स से आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय डी अभी तो हमने शुरुआत ही की है चलो जी इसको हमने रिप्रेजेंट किया है लेट्स से डी से ठीक है गुड फाइन ओके यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय आर आल्सो एंड विद द डी आल्सो ठीक है ना सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू द मास प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड सेकेंड पॉइंट तो इसको एक डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड इज f is inversely proportional to the square of distance between the okay मेरी आदत है यार r बनाने की बिकॉज 12th क्लास को जब पढ़ाते हैं ना तो वहां पे हम लोग इसको r ही यूज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ और वो सब कैलकुलेट करते हुए तो ठीक है तो आदत है मेरी तो d स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू देखो यहाँ पे सेंटर इसका ये सेंटर है
ठीक है ना. लेट्स से दिस सेंटर इज represented as A and this is represented as B. So डिस्टेंस इन दोनों के बीच का क्या है, D. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर लेट्स से 2. क्लियर हुआ यहां तक. सो ऑन कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन, ठीक है ना, कंबाइनिंग oops so on combining equation 1 and 2 we get कि force is directly proportional to m1 m2 divide by d square. क्लियर हुआ यहां तक. ठीक है. नाउ वेरी गुड. नाउ if we want to remove this proportionality sign, ठीक है ना, then we have to put a constant here, that is g m1 m2 upon d square. क्लियर हुआ ये, समझ में आया ये. ठीक है. So this is the formula for the force, gravitational force between two bodies in the universe. Good. Now what is g here? G is called universal gravitational constant. Universal gravitational constant. Its value is fixed throughout the universe. ठीक है. Now its value, the value of g is given by, it is given by, the value of g is given by, it is given by, याद रखना ये, ठीक है, it is given by हेनरी कैवेंडिश. ये यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है. Who gave the value of g? याद रखना इस चीज को, एमसीक्यू में आ सकता है. तो इट इज गिवन बाय हेनरी कैवेंडिश. ठीक है, ये याद रखना. एंड ही यूज बाय यूजिंग द सेंसिटिव बैलेंस. ये भी याद रखना, किससे निकाला था, बाय सेंसिटिव बैलेंस. ठीक है. अब इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना. सो बाय यूजिंग द सेंसिटिव बैलेंस ही गेव द वैल्यू ऑफ, वेरी गुड प्रत्यांशु, ठीक है ना. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस जी is 6.67 into 10 to the power minus 11. सर अब सर यहाँ यूनिट क्या होगी, ठीक है ना. तो लेट मी गिव यू द कैलकुलेशन ऑफ यूनिट. यूनिट कैसे निकालोगे, फ्रॉम दिस फॉर्मूला आप जी जब कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, देखो जरा. फोर्स को डी से, डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाई m1 इंटू m2. नाउ हियर यू सी द फोर्स कैसे निकाला जाता है. तो यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ जी कैन बी गिवन बाय, फोर्स कैसे निकलेगा, न्यूटन. डिस्टेंस किसमें निकलेगा, मीटर, एंड उसका स्क्वायर करना पड़ेगा. एंड मास इनटू मास व्हिच इज गिवन बाय kg स्क्वायर. सो वी हैव न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय kg स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ g. अंडरस्टूड. अंडरस्टूड. सबको समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर, बढ़िया नोट्स. ठीक है. नाउ इतना समझ में आ गया आपको, बोलो बोलो जी. यूनिट एंड गुड गुड. नाउ ओके, वेरी गुड सूर्यांश, क्रिस्टल क्लियर. ओके. नाउ एक चीज नोट लिखवाता हूं आपको. नोट नोट दैट द वैल्यू ऑफ जी, the value of g does not depend on the masses of two bodies. दोनों बॉडीज का क्या मास है उस पर डिपेंड नहीं करेगा. बिल्कुल छोटी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन पर भी जी उतना ही होगा, ठीक है, उनके लिए भी आपको जी वही लेना है.
बहुत मैसिव बॉडीज हैं तब भी आपको लेना है, ठीक है ना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द masses of the two bodies, ठीक है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन, एक चीज ये हो गई। दूसरा, नेचर ऑफ द मीडियम सेपरेटिंग द बॉडीज, नेचर ऑफ द मीडियम separating these sep okay, nature of the medium separating the bodies, ठीक है। एंड द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडीज, ऑफ द बॉडीज, इन सभी किसी पर डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ बॉडीज इस पर भी डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ बॉडीज इन सब किसी पर भी डिपेंड करता, ना इस पे 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 डिपेंड, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। क्लियर? चलो जी। एंड दैट इज वाई, एंड दैट इज वाई G is called universal gravitational constant. You see, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, हमेशा फिक्स रहेगी इसकी वैल्यू। कितनी रहेगी वैल्यू? 6.67 इंटू 10⁻11। याद रखना इस चीज को, आपको पेपर में वैसे लिख के देता है वो, ठीक है ना, और समटाइम्स नहीं देगा, तो आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया? नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ, राइट डाउन, इंपॉर्टेंस ऑफ, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है? ग्रेविटेशनल इज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई बता सकता है मेरे को क्या है उसका इंपॉर्टेंस? आयुष, प्रत्यांशु, क्विज मास्टर, सूर्यांश पाल, कुछ बता सकते हो क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग अर्थ पर क्यों खड़े हैं? हम लोग अर्थ की तरफ क्यों अट्रैक्टेड है? वेरी गुड, इट इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, गुड। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड अर्थ रोटेटिंग, अर्थ रोटेशन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रेविटी, हाँ, गुड। अर्थ अट्रैक्ट्स है, वेरी गुड सूर्यांश पाल, वेरी गुड क्विज मास्टर, very good Ayush. Occurrence of tides, very good. All things are stable. Okay, so the universal law of gravitation है ना, the gravitational force, okay, so the gravitational force, the gravitational force of attraction of earth is, first thing first, responsible for binding all the terrestrial bodies on it, जितनी भी अर्थ के ऊपर चीजें हैं, बिल्डिंग, हम, रिवर, माउंटेन्स, ठीक है ना, वेरी गुड क्विज मास्टर, वेरी गुड। रेनफॉल, स्नोफॉल एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, गुड। एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम, वेरी गुड, राइट, गुड। आप लोग पढ़ के बैठे हो, हाँ। सेकेंड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, it is responsible for holding the atmosphere, holding the atmosphere, holding the atmosphere, very good, सही है। नेक्स्ट, it is responsible for
रेनफॉल एंड स्नोफॉल, ये दोनों चीजें हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सर नमस्ते, अलीशा तोमर, 3 स्टार। ओह हाय। हाय सर नमस्ते, ओके नमस्ते नमस्ते जी। प्लेनेटरी मोशन, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट, it is responsible for rainfall or snowfall. Next, the water in the river, water in the rivers flows because of gravitational force, gravitational force, gravitational force. Fifth point, moon revolves around the moon revolves around the earth. It is because of, it is because of, yes, it is because of gravitational force, gravitational force. Sixth point, that motion of satellite, motion of satellites, satellites, motion of satellites revolving around, revolving around earth is because of, very good, creation of tides, creation of tides in ocean। ठीक है ना। एट, और बताओ, और बताओ। नेक्स्ट, हाँ ये मैं लिख चुका हूं, एटमॉस्फेयर, होल्डिंग अप द एटमॉस्फेयर, है ना, ये लिख पा चुका हूं। एंड मोशन ऑफ planets around the planets around the sun is because of universal this, yes, good. And prediction of, prediction of prediction of prediction about solar or lunar eclipse, eclipses is based on this phenomenon। okay, good। आनंद, हाय। चलिए, इतना समझ में आया, बोलो जी। नाउ after this we are going to have some conclusion about this gravitational force। the first thing also, ये हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया ये। जाट बिलोंग टू हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा। हाय, क्रिस्टल क्लियर, ओ सूर्यांश पाल, वेरी गुड। ओके नाउ यू सी, तो आपने देखा कि ये सारे चीजें हो रही थी, दिस द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कितनी सारी चीजें लिख दी हैं, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है यार, व्हेन आई एम विद यू गाइस यू नीड टू स्टडी ओनली, सेल्फ स्टडी करो जितना ज्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए जी, अब पढ़ते हैं हम लोग कि ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स और उसमें किस तरीके से, सो ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ, and Newton's third law।
न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है। सो as we have discussed that the two bodies apply the force of attraction towards the each other. Suppose that this is the body A, this is body B, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो इसमें मैंने आपको बताया कि इन दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, क्लियर ये बात? थैंक यू वेरी मच। अगर अगर कोई ऐसे बोले ये ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ये गलत हो जाएगा, समझ लेना, ऐसे नहीं लगता। इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, एंड acting along the line joining the centers of these two bodies along this line, ठीक है, and you see this is the force towards the each other, so we can say अगर मैं इस A बॉडी पर फोर्स लगा लिखता हूं तो लिखूंगा फोर्स ऑन A ड्यू टू B, एंड B पर जो लग रहा है इधर की तरफ फोर्स, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, एंड दीज टू फोर्सेस आर equal and opposite, equal and opposite, which is obeying the Newton's third law. Hey, what you guys doing? Are you studying or कुछ भी चल रहा है? Hey, पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड सो ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ समझ में आया ये? सो व्हेन अर्थ इज अट्रैक्टिंग टू द मून, अट्रैक्टिंग मून, द मून इज आल्सो अट्रैक्टिंग द अर्थ, इट स्टेट्स दैट। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है, बोथ द बॉडीज आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। सो इफ लेट्स से जो न्यूटन का जो एप्पल था, ठीक है, ये अर्थ है, ये एप्पल, ठीक है, लेट्स से, सो एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ इज आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एप्पल, ठीक है ना, क्लियर हुआ ये, समझ में आया ये? बट आप बोलोगे कि सर हमें अर्थ ऊपर जाती हुई नजर क्यों नहीं आ रही, ठीक है ना, अर्थ भी तो उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो सर अर्थ का भी मोशन दिखना चाहिए था हमको, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वी नो दैट द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय फोर्स डिवाइड बाय मास। यहां पर ये पॉइंट याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना कि आप मोशन हमें इसका ऑब्जर्व हुआ, मास का, अर्थ का नहीं हुआ, जैसे लेट्स से अर्थ, तो अर्थ का मोशन क्यों नहीं नजर आ रहा है आपको? बिकॉज अर्थ का जो मास है, मास, अगर इट इज दिस मास is high or large, we say that if the mass is very high, larger the mass, least will be the acceleration, acceleration कैसा हो जाएगा, कम, क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ ये, समझ में आ रही बात ये? so that's why, so the mass of earth is high, so acceleration of earth will be less, and that is why the earth is not seen rising towards the apple, क्लियर हुआ ये? यहां से बच्चों क्वेश्चन आता है, याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, वेरी गुड, अभी हम आएंगे उस चीज पे, अभी आएंगे उस चीज पे, अभी आपको ये बताएगा, मैं बताएगा, ऐसे थोड़े ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा कि ये चीज नहीं बताई, सर ने नहीं बताई हमको, मैं तुमको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये क्यों आता है, ऐसा क्यों आता है, तो थोड़ा सा ये हायर जब स्टडीज में जाओगे तो आपको पता चलेगा, दिस इज मास m1, दिस इज मास m2, द there why the force is acting between these two, why the force is acting between these two, because of the transfer of a particle which is called graviton, याद रखना इस चीज को, एक पार्टिकल है जिसका नाम है ग्रेविटॉन, एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटॉन द टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द पार्टिकल एक्सचेंज व्हिच इज कॉल्ड ग्रेविटॉन, क्लियर हुआ ये? ठीक है,
हायर स्टडीज में आपको पढ़ने को मिलेगा। शायद है कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं हो रखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग पढ़ेंगे, फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। ओके, सो ओके ओके ओके, आपको समझाते हैं। सपोज दैट वी हैव अ बॉडी, दिस बॉडी, एंड दिस इज अनदर बॉडी, दिस इज अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड, you see, both the bodies are uncharged. So when the electron is transferred from one body to another, ठीक है, ठीक है, तो अगर इससे बॉडी गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है, एंड यू सी दैट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पढ़ा है ना आपने? तो जिस तरीके से चार्ज बॉडीज किस किस वजह से अट्रैक्ट कर रही हैं, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई इन द सेम वे द टू मैसिव बॉडीज, दो बॉडीज ऐसी जिनके पास मास है, वो अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं एक दूसरे को? बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल विच इज कॉल्ड ग्रेविटॉन। ठीक है, अभी इसके बारे में ज्यादा डीप डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर वही है कि आपको पूरी फिजिक्स यहीं पे पढ़ानी पड़ जाएगी, ठीक है। करेंगे, फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्लास में करेंगे, ठीक है, ओके, गुड, समझ में आ गया आपको? नाउ, नाउ हियर कम्स द प्रॉब्लम्स। चलिए, आर यू रेडी? हाँ, नॉट इन सिलेबस, यस, इट्स नॉट इन सिलेबस राइट नाउ, इन द 9th स्टैंडर्ड इट इज नॉट इन द सिलेबस, बट हाँ, आपको पढ़ने को आगे मिलेगा, ठीक है। नो, नाउ द होल क्वेश्चन आंसर सेशन आ गया भाई हमारे पास। सो अब रेडी हो जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, आप लोग करिए, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू F। क्लियर है ये बात? नाउ हाउ द फोर्स विल चेंज, हाउ द फोर्स will change number 1, if distance between the bodies is reduced to half, number 1. Second, the mass of each object, sorry, each object, oops, each object is quadrupled, quadrupled, quadrupled मतलब 4 गुना। वेरी गुड, चलिए जी, बताइए, क्वाड्रुपल्ड मतलब समझ रहे हो ना? इफ ईच मासेस आर इंक्रीज बाय द 4 टाइम्स, है ना, क्वाड्रुपल्ड। अरे जाट बिलोंग्स टू हरियाणा, सही है, फोर्स विल बिकम 16 टाइम्स, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। सो बताओ, ये क्वेश्चन था, तो मैंने बोला था कि फोर्स जो है, फॉर्मूला क्या है, G m1m2/d²। तो अगर डिस्टेंस, जो नया डिस्टेंस है वो d बाई कितना हो गया, d/2 हो गया, हाफ हो गया है, तो जो नया फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, G m1m2 डिवाइड बाई d/2 का स्क्वायर करेंगे, सो दिस विल बिकम G m1m2 अपॉन d² अपॉन 4। 4 ये फैक्टर इधर चला जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा, 4G m1m2 बाई r, सॉरी, d²। So this is the original force. So you see that the new force will be, 4 times the initial one. तो कितना हो जाएगा, पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 4 times, the force will become the 4 times, easy peasy lemon squeezy, हाँ 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 हाँ, बहुत सही है, good। now second कि अगर उसने बोला कि जो m1 है वो 4 times m1 हो गया है, ठीक है, द न्यू फोर्स, न्यू मास, एंड सेकेंड मास इज ऑल्सो इंक्रीज बाय द 4 टाइम्स, तो न्यू फोर्स विल बी इक्वल टू G m1 डैश m2 डैश डिवाइड बाई d²। सो यू सी
जी 4m1 4m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। यू सी कि हम यहाँ पर जो नया मास जो हो गया है वो 4 टाइम्स हो गया, इंक्रीज कर गया, तो ये बन जाएगा 16 जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मिटा के अलग से ही लिख देते हैं। तो फोर्स विल बी इक्वल टू 16 जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। दिस वॉज द इनिशियल फोर्स, है ना? तो 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स द इनिशियल फोर्स। क्लियर हो गया ये? 10वीं की क्लास आज यार एक ही क्लास ले पाऊंगा मैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको इसी से रिलेटेड। ओके, हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। अब मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए जी, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, between two objects between two objects is 100 Newton. How should how should the distance between these objects be changed so that the force between them becomes 50 न्यूटन। चलिए अब आया मजा, थोड़ा सा ट्विस्ट। क्विज मास्टर, गुड गुड। व्हाट्स योर नेम क्विज मास्टर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गुड, जाट बिलोंग्स टू हरियाणा। जय हरियाणा, हेल हरियाणा। सूर्यांश, ओके गुड। चलिए एक और क्वेश्चन। सो इसका आंसर कैसे करोगे आप लोग बताओ? इसका आंसर देखो। ओके, सो हाउ वी डू दिस थिंग? ओके, सो फोर्स, न्यू फोर्स विल बी, कैसे करना है आपको? कितना करना है? न्यू फोर्स इज ओरिजिनल का आधा हुआ है, ठीक है ना? यही तो है ना? सो which essentially means that G m1 m2 upon d dash square is equal to G m1 m2 upon d square whole divided by 2। You see, ये G से G कैंसिल किया, m1 m1 कैंसिल हुआ, which means that you will get 1 over d1 square is equal to d dash square is equal to 1 by d square into 1 by 2। क्लियर हुआ ये? So d square is equal to d dash square divided by 2, or we can say 2d square is equal to d dash square। तो अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट लूंगा तो 2d square is equal to d dash, which means that d dash square d dash is equal to under root 2 times। So you means that it means that it is not visible। okay okay, so d dash square d dash जो होगा, नया डिस्टेंस जो होगा वो रूट 2 टाइम्स हो जाएगा।
√2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? गुड, सो फार सो गुड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है ना, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।